Good evening. Welcome once again to Vision Wednesday. So good to be back. So let's wait for some of our friends to join up. Hi, good evening. We're just waiting for others to join. Welcome back to Vision Wednesday. Hi, good evening. We're just waiting for some of the others to join up. Am I audible? Hi, good evening. So we're just waiting for some of the others to join up. Today is going to be a very, very interesting time. Hello, Niru. So today we are going to talk about decisions that you make and your decision making. It's a very interesting and very pertinent topic जिसके बारे में बहुत कम बात होती है and every day, every moment of our life we take decisions and we are certainly not aware कि ये decision हमने क्यों लिया, कैसे लिया, क्या ये हमें लेना चाहिए था. We'll talk about these things. This has been a topic of research for me for past about 2 months. I've been reading a lot about the decision making and क्या क्या होता है इसमें इन्वॉल्व क्या होता है और डिसीजन मेकिंग अलग अलग तरह की लोग कैसे करते हैं. सो कुछ एक चीज़ें मेरे बहुत ही मुझे इंटरेस्टिंग लगी है एंड आई थॉट आई शुड on Vision Wednesday I must give this vision to everybody that how your decision making can affect your immediate life and your long-term life. How does it affect your environment? How does it affect your own family, your friends, everyone? So थोड़ा सा और वेट करते हैं. I mean we're just waiting for others to join up. Hi Suresh. So we're just waiting for some of them to join and then we'll start. So good evening once again and let's start today's topic, your decision making. So decisions आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ही शुरुआत से जब आप छोटे होते हैं तब से आप डिसीजन लेना शुरू करते हैं. आपकी मदर ने आपको बोला कि आपने किचन में नहीं आना एंड आई एम गेटिंग सम रिक्वेस्ट टू बी इन योर लाइफ. The permission. Hi, Dr. Ajay. We've just started, and so your decision making today. I was telling earlier, बाकियों को मैं बता रहा था कि पिछले 2 महीने से मैं इस टॉपिक पे काफी रिसर्च कर रहा हूँ and I got a lot of questions
from some of my friends. Sorry, but yeah, I know how to remove this. Yeah. So, all right. Uh, let me let me start again. So, your decision making. I've been doing some research on this, and a lot of people have asked me a few questions. बोला अब जो decisions होते हैं वो अपने आप हो जाते हैं कई बार जिंदगी में, और कभी हमें ऐसा लगता है कि we are not making the decision. ऊपर वाला सब कुछ करवा रहा है. But uh, as I understand, at the end of the day, अगर हम मानते हैं कि कोई एक सुपर पावर है जो हम सबके ऊपर देखती है या हमारी लाइफ को कंट्रोल करती है, still that superpower has given us the choice of making decisions. ये सब कुछ जो है अगर हम, ये बहुत ही आसान तरीका है कि आप सब कुछ ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दें या सुपर पावर पे छोड़ दें, but that is not how it works. There are certain amount of options which are given to you in your everyday life. जब आप छोटे हो और आपके पेरेंट्स ने या आपकी मदर ने आपको बोला हो कि किचन की तरफ नहीं जाना है, and when you are taking a step towards kitchen, I'm sure that's the kind of decision that you make कि मुझे माँ की बात सुननी है या मुझे किचन में जाके खुद अपने हाथ पैर जलाने हैं. So this is like the initial part of your decision making. आपके सामने एक टॉफी पड़ी है और उस टॉफी को मैं बचा के रखना चाहता हूँ या मैं अभी खोल के खा जाना चाहता हूँ. ये एक डिसीजन मेकिंग है. आई मीन एवरीथिंग दैट यू डू, एवरी सेकेंड ऑफ योर लाइफ आप डिसीजंस लेते हैं, बट मोस्टली वी डू नॉट वरी अबाउट इट, वी डोंट बॉदर अबाउट इट. बट यू शुड नो दैट एवरी डिसीजन दैट यू मेक, जितने आप डिसीजंस लेते हैं लाइफ में, वो सब कहीं ना कहीं आपको, आपके एनवायरनमेंट को, आपकी फैमिली को, आपके फ्रेंड्स को, सबको इम्पैक्ट करते हैं. सो आज हम थोड़ा सा बात करेंगे कि डिसीजन मेकिंग में क्या क्या चीजें हो सकती हैं और कितने टाइप के, किस तरीके के डिसीजंस होते हैं. अब अगर मैं आर्मी अपने डिफेंस के पर्सपेक्टिव से बोलूं तो वो देयर आर 3 वेरी क्लियर लेवल्स: टैक्टिकल डिसीजंस, ऑपरेशनल डिसीजंस एंड स्ट्रैटेजिक डिसीजन. स्ट्रैटेजी से ऑपरेशंस आगे प्लान होते हैं और उस ऑपरेशन से आप नीचे जो फ्रंट लाइन फोर्सेस हैं वो टैक्टिकल डिसीजंस लेती हैं कि मुझे राइट से जाना है या लेफ्ट से जाना है, मुझे सीधा अटैक करना है या छुप के अटैक करना है. ये है टैक्टिकल डिसीजंस नीचे के. एट द ऑपरेशनल लेवल आप सोचते हैं कि अच्छा ये लड़ाई इस एरिया में होनी है कि दूसरे एरिया में होनी है, कहाँ मुझे दुश्मन को रोक के रखना है और कहाँ मैंने अपनी स्ट्रेंथ से दुश्मन के अंदर एग्रेसिव जाना है. देन एट द स्ट्रैटेजिक लेवल यू थिंक अबाउट एट द नेशनल लेवल कितनी जगह पे, कितने फ्रंट्स पे मैं लड़ाई खोल सकता हूँ, किसके साथ मैं किस टाइमिंग पे लड़ाई खोलनी चाहिए या किस टाइम ऑफ द ईयर. फॉर एग्जांपल अगर आपने बांग्लादेश वॉर के बारे में पढ़ा हो तो दी होल ऑपरेशन वाज, जनरल मानेकशॉ ने मना करके, एंड द थिंग्स वर एक्चुअली गेटिंग वर्स फ्रॉम सितंबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर से काफी हालात खराब थे. बट द फाइनल बैटल हैपेंड इन दिसंबर. सो ये जनरल मानेकशॉ का एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन था कि जब वेदर ऐसा होगा उस समय पे हमें ये एडवांटेज मिलेगी, एंड इस टाइम तक मेरी जो फोर्सेस हैं वो पूरी तरह तैयार हो जाएंगी लड़ाई के लिए, मुझे जो जो सामान चाहिए लड़ाई लड़ने के लिए वो सब तैयार होगा और उसके बाद हम लड़ने के लिए ऐसे पहुंचेंगे. तो दीज वर एट द स्ट्रैटेजिक लेवल. लेकिन उसके बाद कितना फोर्स कहाँ से दुश्मन को रोकेगा और कितना फोर्स दुश्मन के अंदर एग्रेसिव जाएगा, वो एक अलग एट द ऑपरेशनल लेवल दोस डिसीजंस वर मेड. और एट द टैक्टिकल लेवल कि मुझे ये बांग्लादेश की नदी ये क्रॉस करनी है या ये एरिया मेरे लिए इंपॉर्टेंट है जिसको कैप्चर करना है, आज रात को करना है कि कल करना है, ये सब दीज आर ऑल टैक्टिकल डिसीजन एट द लोअर लेवल. क्या मुझे यहाँ पर ट्रेंच बना के दुश्मन को रोकना है,
क्या मुझे लास्ट मैन लास्ट राउंड लड़ना है, या मैं सिर्फ थोड़े टाइम के लिए लड़ाई करके मेरे को यहाँ से अपनी पोजीशन चेंज करनी है. दीज आर एट दी टैक्टिकल लेवल एंड छोटे लेवल पे कि मैं लेफ्ट से जाऊं राइट से जाऊं. ऑल दीज आर. सो ये एक बहुत ही सेट पैटर्न है जो कि डिफेंस में है. बट जब हम बात करते हैं अपनी लाइफ के बारे में, तो उसमें हमें जो मोस्टली व्हाट आई फील इज देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ डिसीजंस दैट वी आर मेकिंग. वन इज जो हम ऑर्गेनाइजेशन के लिए या अपने बिजनेस के लिए जो हम चाहे आप बिजनेस करते हो चाहे कहीं जॉब करते हो, तो या तो आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई डिसीजंस ले रहे हैं, या आप अपने बिजनेस के लिए कोई डिसीजन ले रहे हैं, वो भी एक ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन है. तो एक है ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजंस. सेकंड है आपके शॉर्ट टर्म डिसीजंस, जो पर्सनल डिसीजंस, राइट. एंड थर्ड है आपके जो डेली और रूटीन और मंडेन डिसीजन जिसको बोलते हैं, राइट. कि आज क्या मैंने अपने ऑफिस का रास्ता आईटीओ की तरफ से लेना है, या इधर ट्रैफिक ज्यादा है, गूगल बोल रहा है ट्रैफिक ज्यादा है तो इधर के बजाय मैं दूसरा रास्ता लूंगा. दीज आर योर डेली डिसीजन. या आप सोचते हैं कि ये मंडेन डिसीजन है, आपको हो सकता है 15 मिनट 10 मिनट देरी हो जाए कहीं से, या आपको लगता है कि गूगल इस रास्ते को सही नहीं बताता है तो मैं इस रास्ते से खुद ही निकल जाऊंगा, चाहे गूगल रेड दिखा रहा है कोई बात नहीं, गूगल मैप्स अगर रेड भी दिखा रहे हैं तब भी कोई बात नहीं. तो दीज आर मंडेन. तो एक ऑर्गेनाइजेशनल हो गए, एक आपके पर्सनल डिसीजंस हो गए, और तीसरा मंडेन या रूटीन डिसीजंस हो गए. कि अच्छा आज मैं चाय ग्रीन टी पीना चाहता हूँ, आज मैं नॉर्मल टी नहीं पीना चाहता हूँ. दैट्स योर मंडेन decision. But what I want to tell you is all these three types of decision, they have a process of decision making in your head. And आप शायद इसको बहुत ज्यादा ध्यान से नहीं समझते हैं या नहीं देखते हैं, but it has all got an impact. चाहे वो routine mundane decision है, this also has an impact on your life every day. So when the nation got इंडिपेंडेंस, जब हमारा देश आजाद हुआ, तो बहुत सारे लोगों को मैं सुनता हूँ कि नेहरू जी ने ये गलत किया वो गलत किया, या उनको आइडिया नहीं था, उनकी वजह से आज हम ये वाला पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हमारे पास अब तक नहीं है, या ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई. बट प्लीज अंडरस्टैंड कि उस समय पे, उस सिचुएशन में, उस हालात में एक इंसान ने जो डिसीजंस लिए वो अपनी तरफ से पूरे रैशनल डिसीजंस लिए. हो सकता है कुछ एक उसमें से आइडियलिस्टिक डिसीजंस हो. सो दिस इज अनदर टाइप. जब मैं आगे बात करूंगा तो आपको पता लगेगा. एक इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग होती है, एक रैशनल डिसीजन मेकिंग होती है, एक नॉर्मेटिव डिसीजन मेकिंग होती है, एक क्राइसिस डिसीजन मेकिंग होती है, एक लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग होती है. आई मीन दीज आर ऑल डिफरेंट डिसीजन टाइप्स एंड डिफरेंट डिसीजन मेकिंग. बट जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ वो ये कि उस समय अगर नेहरू जी ने कोई डिसीजन लिया, उन डिसीजंस के हिसाब से हमें आज की डेट में अगर हम बोलते हैं कि हमारे IITs आर द बेस्ट टॉप वर्ल्ड के टॉप इंस्टीट्यूट्स, सो प्लीज रिमेंबर दैट इट गॉट स्टार्टेड ड्यूरिंग हिज टाइम, because he believed that education was the first place where we need to have certain कुछ ऐसे हमें इंस्टीट्यूट चाहिए जो कि बहुत ही इंस्टीट्यूट्स ऑफ हाई रिप्यूट हों. Indian Institute of Science, Indian Institute of Technologies, these are IIMs. IIMs were started, then All India Medical Institutes were started. So these are all coming from his decision making. जिसको आप 70 साल के बाद 75 साल के बाद आप बोलेंगे कि ये उस टाइम पे अच्छा डिसीजन लेना चाहिए था. अरे उस समय में, उस फाइनेंशियल सिचुएशन में, उस पार्टीशन के टाइम में, the kind of decisions that he's made were the best that he could make. But today we can, when in the hindsight, it is very easy. आपने भी अपनी जिंदगी में कुछ एक डिसीजन लिए जिसको आपको लगता है कि अब मुझे ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहिए था. But for that time, that was the best decision that he took. आपको कैसे मालूम था कि यार, और सबसे बड़ा रिग्रेट ये होता अगर आपने वो डिसीजन नहीं लिया होता. आप आज भी ये सोच रहे थे, अरे यार अगर मैं उस समय ऐसा करता तो शायद ये हो जाता. बट आपने, प्लीज ओन योर डिसीजन. आपने जो डिसीजन लिया, द बेस्ट पार्ट अबाउट टेकिंग अ डिसीजन इज ओनिंग योर डिसीजन. सो 3 तरह के डिसीजन है आपके. एक ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन, एक पर्सनल डिसीजन और एक रूटीन डिसीजन. ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजंस में मैंने जो अपनी रिसर्च में देखा, most of the people use a rational mind, non-emotional approach,
non-intuitive approach. 90% of your decisions in the organization, for example, हमारे एक मित्र हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है और बहुत ही अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वेरी डेडिकेटेड, वेरी कमिटेड, and he makes decisions for as a chief financial officer of his company, जो कि काफी बड़ी कंपनी है, उनके लिए वो डिसीजंस करते हैं और बहुत अच्छे डिसीजंस उनके मतलब रिजल्ट्स आते हैं, and his whole company is dependent on him and they appreciate his kind of decision making and the financial prudence that he uses. But when we talk of his personal decisions, I'm not sure. I mean, it must be good, but I don't know whether most of the times is he taking a rational decision or not. And his routine decisions are certainly, I know, they require a lot of help and effort, and I think he needs to improve on the routine decisions. And I keep telling him that, even for me, मेरे लिए भी मुझे लगता है कि जो मैं रूटीन डिसीजंस लेता हूँ उसका इम्पैक्ट मुझे बाद में नजर आता है. When I made this a small little table for myself, उसमें कुछ certain queries डाल के and x and y axis पे, and then when I made this table and made an analysis, I realized, yes, this routine decision is making a long-term impact on my life. And why is it, जब मैं organization के लिए decision ले रहा हूँ तो मैं detach होके और उसको पूरा rational, decision making का एक process है, rational decision making का. Identify the problem, gather the information. आप पहले प्रॉब्लम को समझते हैं अच्छी तरह कि क्या किस पे डिसीजन लेना, उस प्रॉब्लम के बाद उसके हिसाब से उसका इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं कि इसमें क्या क्या हो सकता है या क्या इसके लॉजिक्स हैं, और उसके बाद उसको आप वैलिडेट करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं. इवैल्यूएट करने के बाद उसमें से आप ऑप्शंस बनाते हैं कि 3 ऑप्शंस हैं, व्हाट इज द बेस्ट ऑप्शन, एंड देन यू गो विद द बेस्ट रिकमेंडेड ऑप्शन. ये एक रैशनल डिसीजन मेकिंग का एक साइकिल है जिसको आप यूटिलाइज करते हैं mostly in the organizational goals. But the problem is that most of our personal decisions are based on gut or intuitive decision making, जिसको बोलते हैं, या emotional decision making. For example, आपके say you have a friend जो कि आपको बहुत ही क्लोज है आपके, and he wants to buy he wants to buy a car for his son, and his son is say about 20-21 years old. तो आप उसको recommend करते हैं कि ठीक नहीं है, सड़कें वो नहीं है, they are not safe, so why are you buying this car for him? It is a waste of money and you should not waste this. So here your decision is based on the emotional attachment with that person, कि मेरा दोस्त ऐसे दुखी नहीं होना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए. But at the same time, maybe his decision to buy a car for his son is based on a rational thinking. He wants to make him independent. So please understand that, in the decision making, this emotional, especially the personal decision making, there is a lot of emotional baggage that we use, which is where हमारे जो decisions हैं वो वेवर करते हैं, और आप बाद में आप सोचते हैं कि नहीं, वो डिसीजन है, वो आदमी हमेशा डिसीजन लेता है, बिल्कुल करेक्ट लेता है, और मैं डिसीजन लेता हूँ तो वो गलत हो जाता है. तो ये पर्सनल डिसीजंस को अगर आप लेंगे एज आई टोल्ड यू ऑर्गेनाइजेशनल तरीके से, तो you will make better decisions. Identify the problem, gather the information, evaluate the options, and then out of top 3 options, take the best option. But it is not possible every time, right? Say for example, you have an office very important meeting and you get a distress call from one of your friends. What will you do? There's a decision to be made. और ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल था, एक एक ऑथर है हार्वर्ड के, उन्होंने एक बहुत अच्छा केस स्टडी दिया था जिसमें कि this was very interesting, and I realized that this was a very close to what happens to all of us, and everybody has gone through this kind of situation one time or the other. So the man decided कि that he had to leave the office meeting and he had to go
to meet his friend because he had a distress call. वो गया, and it so happened, unfortunately for him, that next day's office meeting was very important and they lost the contract. When he got back, he got laid off. So you had gone to look up your friend in the time of distress, but at the same time, uh, you also came under distress because you have been laid off. So आपने एक प्रॉब्लम को बढ़ा के डबल कर दिया. But जब आपने ये decision लिया, firstly you were emotionally attached in the decision. Secondly, it was a decision which weighed over the financial or the other things, and you had no way to know that this is how the things will happen. But what he tells me is, इसके बाद जो उसने स्टोरी, यहाँ तक की स्टोरी समझ में आती है, बट उसके बाद की जो स्टोरी उन्होंने यूज केस बताया वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि दैट मैन लर्न फ्रॉम दिस and he still continued to be on the emotional decision making for a couple of years, and he started his own business, failed in that. He started some other, some partnership thing, he failed in that. And thereafter, he at some stage he got a mentor, and that mentor told him that this is how the decisions of your organizational goals have to be made. And thereafter his whole decision making process changed. He always analyzed it, and thereafter उसका बहुत अच्छा example है कि उन्होंने he started up a chain of stores in USA, and thereafter became very successful and all that. But the point that I'm trying to make is that he owned his decision and learned from it. And he doesn't say at any stage कि वो decision गलत था या ये decision गलत था. But the best part is that man owned the decision. 90% of the times we say यार situation की वजह से ऐसा हो गया, circumstances की वजह से हो गया. Yes, circumstances were there, but at the same time, the superpower which is controlling the whole life, maybe whatever, God or ईश्वर, अल्लाह, whoever, जो भी ऊपर है, उन्होंने अगर सब कुछ कंट्रोल करते हैं, तभी भी उन्होंने आपको ये एक ऑप्शन दिया है कि आप डिसीजन अपने आप ले सकें on every level, and that decision you have to stand by. So your decision making process that you use, sometimes you have to make a little change in that. I also feel that most of my decisions at some stage are more emotional than more pragmatic or more analytical. Then I have another friend, Sudhir, आप जानते हैं उसको. He's very analytical on those cases. He's the speaker on every alternate Wednesday. He's very analytical, and I'm emotional. So जब हम decision लेने वाले होते हैं, हम एक दूसरे से बात करते हैं. So he's able to tell me that ये तो गलत सोच रहा है, or I'm able to tell him sometimes, यार छोड़ ये, मतलब every time you can't be prudent. You have to take both kind of decisions. So the point in life is that you have to make rational decisions. You have to make emotional decisions. You will make emotional decisions. You don't have to make emotional decisions, but you will make emotional decisions, and you will make mundane decisions, regular routine decisions. For example, आज मैं ये रास्ता ले रहा हूँ या नहीं ले रहा हूँ, आज मुझे रोज सुबह उठ के चाय पीनी है या नहीं पीनी है. These are mundane decisions, but they can also make a lot of difference. But as you start preparing your mind, जैसे जैसे आप अपने माइंड को तैयार करते जाएंगे ये डिसीजन मेकिंग के लिए, फ्रॉम इमोशनल टू नॉर्मेटिव. नॉर्मेटिव डिसीजन होता है जिसमें आप एनालिसिस है, बट यू balance the emotion and the practical part of it. So when you turn your mind and you train your mind from emotional, strongly emotional, to your normative decision making, you will find that it becomes a habit with your mind. And when it becomes a habit with your mind, you are likely to take better decisions. ऑप्टिमल सॉल्यूशंस जो नॉर्मेटिव डिसीजन मेकिंग में होते हैं वो उसमें आते हैं. देन देयर आर आल्सो वेज, दूसरे तरीके जो मुझे लगता है, जो मेरी रिसर्च में या मेरे जो इतने दिन से पढ़ रहा हूँ मैं, उसमें जो समझ आया, एक होता है कोलैबोरेटिव डिसीजन मेकिंग, बट व्हिच कैन नॉट बी डन फॉर एवरीथिंग.
कोलैबोरेटिव डिसीजन मेकिंग में आप यू मेक अ ग्रुप, मे बी नॉट अ ग्रुप, और अगर आप कोशिश कर सकते हैं कि यू एंड योर फ्रेंड, लाइक आई टोल्ड यू, मैं और सुधीर, so we have totally two different decision makings, right? His style of decision making is different, my style of decision making is different, and हम दोनों अगर एक दूसरे से कंसल्ट करते हैं, we get the best and optimal approach. So this is where, I mean, if you can, I'm sure most of you are using this technique but you don't know it. So I'll suggest that जब भी आप ऐसे कोई decision making में process में जा रहे हैं, तो it's best that you speak to a person with whom, on whom you rely. And अगर आपको लगता है you are too pragmatic, बहुत ही practical और बिल्कुल rational decisions लेते हैं, then go to a person who's a little more emotional. He will give you another touch of better decision making in your process. अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल डिसीजन मेकिंग करते हैं, तो आप फाइंड अ पर्सन और अ फ्रेंड जो rational decision making करता हो, and you will find that normative decision making will become habit. Slowly you will rub off on each other. So what my final, I mean, I don't know, it is not written in any of the research papers that I read, but मुझे जो समझ में आया, जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ आज, कि decision making में the best part, the best way to move forward is have a partner or a decision, a collaborative decision making. For everything you can't do it, but try for bigger decisions and a long-term decision. You must have somebody with whom you can consult, with whom you can speak, a friend or family or somebody, because friend is better, because family will also be in the similar emotional turmoil that you are in. So have somebody and understand his kind of decision making. Not just having somebody, also understand his way of thinking, because every time he gives you an option, ask him why. Ask him why. And when the other person gives you, when your friend gives you the logic behind it, try and understand it. And अगर आप उसको भूल भी गए हैं, your mind has absorbed, your subconscious mind, which I've spoken a number of times, that has absorbed that decision and the process of decision making. Now slowly you will realize कि आपके decision making में, maybe in 6 months, 8 months time, your decision making will become balanced with emotional. If you are an emotional person, you will start getting the rational side of it, and if you are a rational guy, you will start getting the emotional side of it. तो ये collaborative approach ना सिर्फ better decision देती है, but also it helps your mind to grow in a manner wherever it is lacking. There are very few people that I met who have a very balanced approach on things. There are very few people that I see जो sometimes we are faced with, sometimes I mean, I think every day, हर रोज चाहे वो बिजनेस के लिए हो, चाहे अपने पर्सनल उसके लिए हो, हर जगह आपको आई थिंक ऐसे डिसीजंस आपको लेने पड़ते हैं जिसमें आप समटाइम्स यू फील कि मैंने ये डिसीजन ठीक ले रहा हूँ या नहीं, while you are taking the decision, right? So उस डिसीजन मेकिंग में your decision making has to start improving as you grow. एक बड़ा पुराना तरीका था, एक बहुत छोटी सी कहानी है which I want to share with you. So एक पुराने टाइम की बात है जब किसी की शादी तय हुई, एंड तब वो एक गांव से दूसरे गांव बारात जाती थी, बट उन्होंने बोला कोई आप जो 30 साल की उम्र के लोग हैं, उससे बड़े हैं, वो लोग शादी में बारात में नहीं आए. Now this boy was quite surprised, but he said कि भाई अगर उनकी शर्त ऐसा है तो क्या करें. तो उसके जो ग्रैंडफादर थे उनको बोला उन्होंने कि आपको मैं ना पेटी में या ट्रंक में डाल के लेके जाऊंगा अपने साथ, आप किसी को दिखना मत, हम आपका ध्यान रखेंगे, बट वी वांट यू देयर. अब वहां गए और वो शादी की तैयारी थी और वो उनका बारात की स्वागत वगैरह हुआ, और वो लड़की वालों ने बोला कि देखिए बारात तो आ गई है, लेकिन हमारी एक और शर्त है कि आप लोग 300 लोग आए और आप सबको 300 बकरे खाने, हम 300 बकरे काट रहे हैं, आपको 300 बकरे खाने. नाउ द बॉय सरप्राइज कि एक आदमी एक बकरा कैसे खाएगा. आई मीन कुछ भी, कितना भी बड़ा पहलवान हो, एक पूरा बकरा बना हुआ खाना मुश्किल है. तो उसने बोला हाँ जी हम खाएंगे जरूर, बट आप थोड़ी देर वेट करिए.
तो वो वापस आए और आके अपने तंबू में या अपने रहने की जगह पे उसने चुपचाप ट्रंक खोलो और पूछा, दादाजी ऐसे ऐसे शर्त है? तो दादाजी ने उसके कान में बोला कि बोलो, हमें आपकी शर्त मंजूर है, हम 300 बकरे खाएंगे, लेकिन हमारी एक छोटी सी शर्त है, एक एक करके आप बकरा बनाओगे, एक साथ नहीं काट सकते और एक साथ नहीं बना सकते. नाउ इमेजिन what a small difference in the decision making. And this guy went back and told them कि आप एक एक करके बनाओ. And immediately the girl side, they realized that there's somebody elder and wise with them who's given them the idea. So this collaborative decision making, the idea of, why do we go to our elders for decision? Because they have the experience. हम अपने माँ बाप से, बड़ों से पूछते हैं, इसलिए पूछते हैं क्योंकि उनके पास कुछ ऐसे लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं. And some of them would have taken certain decisions which they regret, some of the decisions that have not gone so well in their life, but they have all learned from it. So please go to them. Go to, instead of 5G, go to like Amari Saab says, instead of 5G, go to Pitaji and Mataji, and like your elders, your friend. आइडेंटिफाई, अपने लाइफ में आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन ऐसे आपके आसपास आपके रिसोर्सेज हैं जो कि आपकी टाइप का डिसीजन ना लेके थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से डिसीजंस लेते हैं. So please collaborate with them, understand their decision making, and this will certainly improve your own decision making in life. And I strongly believe that हमारे डेली डिसीजंस, हमारे पर्सनल डिसीजंस, हमारे फाइनेंशियल डिसीजंस, हमारे लॉन्ग टर्म डिसीजंस, these are all these can all be improved, and this can all, our mind can be trained to take better decisions. Not that कि आज की डेट में मैं बोल रहा हूँ कि सबके डिसीजन गलत है, बट आप अपने डिसीजंस को और बेटर कर सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं यूजिंग दिस कोलैबोरेटिव टेक्निक. So thank you so much. I hope you enjoyed today's Vision Wednesday, and I love talking to you every Wednesday, and I hope that I add value to your life. See you next week, and we are also हमारा जो flagship program है Dream Achievement Process, उसका हम very soon we are taking I think this Saturday we are having a session, and then on second we are having another session. We are doing 2 sessions, one after the other. We'll request you to join up. We'll want more and more people, and this is a boot camp that we are doing. It is going to be about 2 hours, and thereafter the next session, next course is going to start around 14th or 15th of October. Unfortunately, I mean, in a year we can't do more than 3 or 4 courses. हम इससे ज़्यादा कर नहीं पाते हैं, इससे ज़्यादा टाइम नहीं है. Though we want to increase the frequency, and we want to increase the number of people to whom we reach today. Thank you so much. See you next week, and keep checking our website, keep checking our social handles to find out the next Dream Achievement Process Bootcamp. Bye bye. Thank you. Shabakar.